my dear students, today we will be continuing for SQL next commands and will try to continue from the part where we have left in video 1. Right, first of all, the SQL select statement. What is this? This command can perform selection as well as projection. Right, means selectively we can see the data of a table, or through a projection, means specific rows if we want as per any conditions that we can also see. Most extensively used SQL command it is, means mostly this select command is used. It can be used to retrieve a subset of rows or columns from one or more tables present in a database. Means using this select command we can see any specific rows, any specific columns as per the given conditions. Now let's see how it can be done. Here I have opened the SQL and already I have prepared a table named T2. Here you can see 3 rows I have inserted here. Now how to use this SQL select statement? Right, for select statement what we have to do? Select, let me make it enlarged so that it will be more visible to you. Now here select star from T2. This is the command. Here select is a keyword, star means all data, all the rows of your column we want to see. Then from is the keyword and T2 is the name of your table. Any name which you have given to your table, that name will be given here, and just press enter. All the rows of your table will be visible here. Right, this is how the select statement is used. Another use is like we want to see the selective columns. For example, I want to see only name, then type select, only type the name of the column which you want to see. Suppose after name I want to see roll number, then you can type roll number. Fine. Then same thing from the table name. Right, means the sequence in which you want to see, the same sequence can be used, or any single column you want to see, then only single column name will be used. 2 column, 3 columns separated with comma, that can be written, and just press enter. You can see name, because here we have written name at first position, that's why name is here. After that roll number is displayed. This is how this can be used, select statement can be used. Right, after that selection statement. Selection statement already I have told you, this capability of SQL returns the tuples from a relation with all the attributes. This format I have shown you, that first of all select, then column name, comma, next column name, comma, next column name, any number of columns you want to see and in any order. After that from, and then your table name. I have already shown you this one. Next is projection. Projection is selecting specific rows, means using the where clause. This is a new keyword, but the most important thing which we will be using in 11th as well as in 12th, and everywhere it is used. Right, to select all the columns from a table, the asterisk can be used as select star from Tn. This already I have shown you that star means all. I want to see all the data of the table, then this command is used, select star from the table. Right, this I have shown you. After that using where clause. What is done in here? Using with a select statement to apply any specific condition. Yes, this where is used with specific selections. Selections means selection is done using specific conditions. Right, means if we want to see the data of a table which satisfy a particular condition, then we will use where. Okay, as per which you want to view your data. जैसा डाटा हमें देखना है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, as per that we can view. Now how that can be done?
चलिए देखते हैं. Here this is my table T2, right? I want to see the data. First of all I want to see the name. Okay, किसके names? From T2. ये तो सिंपल है, क्लियर है. तो मीन्स आई वॉन्ट टू सी नेम कॉलम फ्रॉम T2. लेकिन कौन सी नाम? वेयर. एक नई चीज सीख रहे हैं हम. वेयर क्या? सपोज मैं देखना चाहती हूँ वेयर रोल नंबर इज 1. ओके, जिस बच्चे का रोल नंबर 1 है सिर्फ उसका नाम दिखे मुझे या उसकी क्लास दिखे, वट एवर यू वॉन्ट. तो वेयर जो कॉलम है आपका दैट एज इट इज यू कैन टाइप वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1. ये कंडीशन लगाई है हमने कि भाई जिस बच्चे का रोल नंबर 1 है ना उन बच्चों के नाम दिखें. फाइन. तो हेयर if it is in integer then no quotes required, and if it is in string then quotes will be required. Okay, then terminator, just press enter. You can see जिस बच्चे का रोल नंबर 1 होगा only those names will be appearing here and it was our table. चलो एक और कंडीशन लगाते हैं. फाइन. क्या कंडीशन लगाएं? चलिए लेट्स सी. सेलेक्ट आई वांट टू सी नेम एंड क्लास, राइट. वेयर कहाँ से देखना है? फ्रॉम T2. किसका? वेयर क्लास इज क्या देखे हैं? क्लास 2, 3 and 6 आर देयर. आई वॉन्ट टू सी द नेम एंड द क्लास वेयर क्लास इज 3. ठीक है. वेयर क्लास इज इक्वल टू 3. Terminator. Press enter. Right? Got it? Now next is, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. I want to see the name and roll number from T2 where class नहीं, अब हम नेम डालते हैं. स्ट्रिंग का दिखाते हैं आपको एक बार. नेम इज इक्वल टू दे, राइट. एज इट इज इन स्ट्रिंग दैट्स वाई वी विल राइट इट इन कोट्स. ओके, आई थिंक द कमांड इज क्लियर. सेलेक्ट द नेम ऑफ द कॉलम सेपरेटेड विद कॉमास. जिन्हें आपको देखना है, जो भी कॉलम आपने देखने हैं, जस्ट टाइप दोज कॉलम नेम सेपरेटेड विद कॉमा फ्रॉम टेबल नेम, वट एवर द नेम ऑफ योर टेबल. देन वेयर कीवर्ड, then the condition which you want. Fine. Then the condition which you want means suppose my condition is जिसका नाम देव है. Fine. Press enter and you can see देव का roll number and name because here we have written roll number and name. Fine. Now next एक और दिखाते हैं. I want to see the name and roll number of those students whose roll number इज लेस देन इक्वल टू 2. या तो 2 से छोटे हो या 2 के इक्वल हो, राइट. एंटर. यू कैन सी 1 और 2 रोल नंबर का डाटा दिखा दिया. आई थिंक नाउ वेयर क्लॉज इज क्लियर. मीन्स सिंपल विद सेलेक्ट स्टेटमेंट वट एवर द कॉलम वी वॉन्ट टू सी एंड आफ्टर वेयर वी कैन स्पेसिफाई द कंडीशन. क्लियर. नेक्स्ट इज रीऑर्डरिंग कॉलम्स वाइल डिस्प्लेइंग क्वेरी रिजल्ट्स. रीऑर्डरिंग मीन्स फर्स्ट कॉलम को सेकंड पे भेज देना, सेकंड को फर्स्ट पे भेज देना, मीन्स रीअरेंजिंग दैम. बट इट इज डन ओनली इन द डिस्प्ले, नॉट द परमानेंट अरेंजमेंट. फाइन. while displaying query results, the column of table can be reordered, but only for display purpose. No actual rearrangement is there. How it can be done? With select statement, name of the column separated with commas, same thing from table name. It's reordering. Already I have shown you, but once again, in my table, suppose my third column was class, लेकिन मुझे class सबसे पहले देखना है. Class के बाद I want to see name and then I want to see roll number, right? जिस order में आप लिखेंगे, in the same order the table will be displayed here. Fine, this is the way of reordering. और कहाँ से देखने हैं? From T2. T2 is my table name. Press enter. You can see on this arrangement is only and only for the display purpose. Fine. Class, name, roll number. As you will type in the same order the column names,
the same order will be displayed. Fine. After that, eliminating duplicate redundant data. Duplicate, if there are data which is being repeated in your table and we want to see after removing the duplicates how it can be done. For that, distinct keyword is used. Distinct clause is used to remove duplicate rows from the result of a select statement. It is used to retrieve only unique values for a column in a table. Means if we want to see only and only the unique values in a table, then we will use distinct keyword before that particular column. Right? चलिए देखते हैं how it can be done. Right now I think we don't have any repeated data. First of all, let's enter a row. ठीक है, कैसे डलती है रो? Insert into T2, values, round braces started, then your roll number. Suppose roll number again I am repeating 1. Fine. Then name, whatever the name you want. Then class, again I am repeating 6. Done. One row inserted. Now next row, one more row we will insert. Now you can see, using the arrow keys of keyboard I can have the already used commands. Means again and again no need for typing the commands, and you can make changes here only. Fine. In this command I'll make the third class ले ली मैंने, और यहाँ पर बच्चे का नाम लिया मैंने हितेश. I think हितेश was there. Yes, हितेश. And roll number 2 कर देते हैं. Fine. Okay. चलिए, let's see the data of the table. Select star from T2. This is the command to see the whole data of your table. Now you can see roll number is also repeated, name is also repeated, and class is also being repeated here. Now हम कौन सी command सीख रहे हैं फिलहाल? We are learning distinct clause, eliminating duplicates. Find how to remove the duplicates. Now let's see. Select, मैं टाइप करती हूँ distinct. This is the keyword, or I want to distinct only name column. Fine. From T2. Fine. Means जिस column से पहले आप distinct लगाएंगे, it will remove the duplicates from that column only. Press enter. Now you can see Hitesh was twice there, but here only once it is displayed. Fine. अब दूसरी कॉलम टेबल में लगाते हैं. Select distinct, किस में लगाएं? रोल नंबर में लगाते हैं. फाइन. रोल नंबर. फिर मुझे इन बच्चे का नेम भी देखना है एंड क्लास भी देखनी है. फ्रॉम T2. राइट. प्रेस एंटर. नाउ यू कैन सी what is done. Is there any issue I have done here? Select, let me check it. Distinct roll number. Yes, I have inserted now you can see only the repeated repeated data is managed in the column with which we have written the distinct keyword. Fine. Here I was trying to show you that along with the distinct we can use name and other columns also, but it's not possible as with which suppose यहाँ रोल नंबर 1 2 1 2 दो हैं, तो किस बच्चे का नाम और किस बच्चे का क्लास दिखाएंगे? As we have not decided any of the condition here, that's why the whole data is displayed here. Same thing here, as it's not decided कि कौन से 1 और 2 रोल नंबर को वो रखे, मीन्स विजय और देव का नाम दिखाए साथ में या देवा और हितेश का दिखाए. फाइन. So that's why I was doing this. But here if
distinct, or we have to remove the eliminates, we have to eliminate the duplicates. For that, distinct keyword will be used before the particular column, right? Next is SQL operators. While working with select statement using where clause, condition based query processing is carried out using 4 types of SQL operators. Already we have shown you that how to use this where clause, fine, but in this where clause we can use different operators also. These operators are like arithmetic, relational, logical and special operators. Those are also called aggregate functions, fine. Now how they can be done? Let's learn them one by one. First of all, arithmetic functions. In arithmetic functions, they are mathematical operators like plus, minus, divide, multiply. They are used with conditional expression and performing simple mathematical calculations also. How they can be done? They can be done with your table. They can be used with your table as well as without table also they can be performed. Let's see how. चलिए, suppose I want to type select 5 into 4, then terminator, fine, press enter. You can see the calculation is done, fine. अगला देखते हैं, 5 divided by 4 multiplied by 3 plus 2. I think it's difficult for us to calculate. It will take hardly 1 or 2 minutes, but just press enter and answer is here. Got it? It is using BODMAS. जो मैथ्स का लॉजिक है, BODMAS, that it is using. Means this is the way in which we can do the calculation. The same arithmetic functions can be used in table also. How? Let's see. हमारे पास कौन सी टेबल है? T2, right? In that integer column, integer भी होती है ना calculations. Integer we have class, right? तो here suppose I want to see class, जिस भी बच्चे क्लास है उसमें +1 हो जाए, ओके, फ्रॉम T2. अब ये फ्रॉम T2 क्यों बार बार लिखना पड़ता है? बिकॉज ये क्लास क्या है? इट्स कॉलम नेम. अगर ये स्ट्रिंग होता तो वी हैव टू राइट इट इन कोट्स, बट इट्स कॉलम नेम, दैट्स वाई नो नीड फॉर कोट्स. बट ये कॉलम कौन सी टेबल का है? दैट्स वाई वी हैव टू टेल SQL दैट दिस क्लास इज फ्रॉम T2 टेबल. ओके, जस्ट प्रेस टाइप टर्मिनेटर, प्रेस एंटर. यू कैन सी जो भी हमारी क्लास थी, मैं आपको क्लास दिखाती हूँ. हेयर यू कैन सी 2 3 6 6 3. हेयर इन एवरी क्लास 1 1 इज added. This is how the arithmetical operators can be used. Next is evaluating scalar expressions with select statement. This is what I have shown you right now. Okay, MySQL permits calculations on the content of the columns and then display the calculated results using the select statement. This is what I have shown you. Means we can use these arithmetic functions on specific columns of your table, but the condition is the data type of that table that should be of integer data type, right? Next is relational operator. Relational operator means which are less than, greater than, equal to, not equal to, those all are coming under relational operator. They are used specifically to compare two values of the same or compatible data types. In our table, how we can use it? We can use that here select different column names separated with comma from table name, where the specific condition you can put. Let me show you it practically. Suppose I want to see the all the data. All data कैसे देखते हैं? Select star, ठीक है, from T2. लेकिन अभी भी मुझे कंडीशन लगानी है where रोल नंबर और क्लास लगाते हैं, where class is greater than 3, right? जहाँ भी क्लास greater than 3 होगी, only that data will be shown. Now you can see only there were two rows where class was greater than 3, and if we'll put
सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, देन जिसकी क्लास 3 भी होगी दैट ऑल्सो विल बी डिस्प्लेड. नाउ यू कैन सी we were having 2 data of greater than 3 and 2 of equal to 3. This is how we can use relational operators in SQL. Next is logical operators. Logical operator means there are 3 logical operators: and, or, not. These are the operators used to combine multiple conditions to narrow data selected and displayed on the basis of conditions specified in SQL. Means these are, नाम से clear है, logic है कुछ. Fine. So these are the operators which help us to put specific conditions, multiple conditions, एक या एक से ज़्यादा conditions we can apply in our table using these operators. These 3 operators are there: and, or, not. These logical operators are also named as Boolean operators. क्या कहते हैं? Boolean operators. Now let's learn all these one by one. First of all, and operator. And हिंदी में और होता है ना, दिन और रात. Means both the conditions have equal importance. एक कंडीशन एंड से पहले लगाएंगे, एक कंडीशन एंड के बाद लगाएंगे. एंड इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू ओनली देन द डाटा विल बी डिस्प्लेड. समझ रहे हैं? एंड का मतलब हिंदी में समझे, मतलब और. मीन्स इट हैज 2 कंडीशंस एंड बोथ शुड बी ट्रू, ओनली देन द डाटा विल बी डिस्प्लेड. इट डिस्प्लेज द रिकॉर्ड and return a true value if all the conditions specified in where clause are true. ऐसा नहीं है कि हमने 2 या 3 conditions दे दी एंड लगा के and any one condition is true then the result will be displayed. No. And में it's a compulsion when all the given conditions are true, only then and operator will work. Like how, see here, select, then the column names which you want to see, then from which table name, then where is used for putting conditions. जहाँ भी आपने condition लगानी है there where clause will be used. Then condition, look, एक condition ये है, दूसरी condition ये है, and in between that and operator will be there. Okay, and we have to type. After that let me show you it practically. Suppose this was our table. Let me show you the complete table. Okay. Here I have typed select star from T2. Okay, ये हमारी complete table है. Now I want to see the data. चलिए select star करते हैं. Star from T2 where. अब condition लगानी है 2. कौन सी condition लगाएं? बताएं. I want to see the data of those students whose roll number is 1 and class is 6. कर दें? पहले देख लें. 1 है, 6 है, राइट? अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो सिर्फ ये देवा वाला रिकॉर्ड शो होना चाहिए. करें? Where roll number is equal to 1 and class is equal to 6. Done. 2 conditions we have put and in between them we have put the AND operator. Just press enter and you can see the result is here. In the same way any 2 condition we can put and put AND operator in between and the result will be displayed. Right? Next is OR operator. OR means हिंदी में क्या होता है? या, अथवा, है ना? मीन्स एनी वन. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डू दिस और दिस, मीन्स दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है. द सेम लॉजिक अप्लाइज हेयर. मीन्स इट डिस्प्लेज द रिकॉर्ड एंड रिटर्न अ ट्रू वैल्यू इफ एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन वेयर क्लॉज आर ट्रू. मीन्स जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उनमें से कोई भी एक ट्रू हो then your data will be displayed. It's not a compulsion कि जितनी भी कंडीशन दे रखी हैं सारी ट्रू, राइट? कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी then it will display. चलिए इसे भी प्रैक्टिकली देख रहे हैं. The same command we should use, right? मैं and की जगह और कर देती हूँ. फाइन.
लुक, और कर दिया मैंने हेयर। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा पहले समझेंगे। इट विल डिस्प्ले होल डाटा, लेकिन कौन सा, वेयर या तो बच्चे का रोल नंबर 1 हो या उसकी क्लास 6 हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, राइट। प्रेस एंटर, नाउ यू कैन सी रोल नंबर 1 2 बच्चों का था और क्लास 6 भी 2 बच्चों की थी। तो फर्स्ट डाटा में ये कंडीशन सेटिस्फाई है, सेकेंड डाटा में ये कंडीशन सेटिस्फाई है, थर्ड रो में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, राइट। आई थिंक यू गॉट इट। इन और ऑपरेटर एनी ऑफ द कंडीशन गिवन कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, कोई भी एक भी ट्रू होगी देन इट विल डिस्प्ले योर डाटा, राइट। नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट मीन्स बिल्कुल उल्टा है एंड का। when any of the given condition is not true, उसको छोड़ के बाकी सारा डाटा डिस्प्ले होगा, राइट। इट डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड and return a true value if none of the given conditions specified in where clause are true। कैसे, मीन्स सेम कमांड यूज करते हैं और अब हम यहाँ पर नॉट कर देते हैं, बिकॉज आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। लुक, मैंने फर्स्ट में यहाँ नॉट एंड लगाया, फिर और लगाया, वहीं पर अब नॉट लगा रही हूँ। मीन्स एंड में क्या था, when both the conditions are true, और में when any one condition is true, और नॉट में वो डाटा दिखेगा जहाँ ना तो रोल नंबर 1 हो ना क्लास 6 हो। इट्स शोइंग एरर, व्हाई नॉट गेटिंग। not operator, okay, here we can't give two conditions, here we have to give one condition, I think. Let me try it. Yes, now see, here we can give not before the condition, here we have given that class is equal to 6, means जिस बच्चे की class 6 नहीं होगी it will display only those data. Here you can see the class is not 6 for any of the student given here, right. So this is how we can use and, or, and not operator. That's it for now. Thank you.